Good morning, students. As all of you know, we are continuously reading the chapter 2 from trade to territory. Okay, so in this picture you can see this is Sirajuddaulah. Sirajuddaulah was the Nawab in that time of the Calcutta. He was a very strict ruler. Before that, whatever the ruler is, they don't interrupt the Britishers to do the trade, right? But he was telling ki no, you cannot do your business from here. You cannot make fort in the Calcutta, right? So after the defeated the Plassey, Sirajuddaulah was assigned it and Mir Jafar made the Nawab. What happened in this battle of Plassey? Sirajuddaulah was defeated. Why he is defeated? Because his one commander Mir Jafar was cheated him. He didn't send one troop of the soldiers. So because he was in the favor of the Britishers. So that's why Sirajuddaulah defeated in this Plassey battle. So after that, the company was still unwilling to take over the responsibility of the administration. So he was not Britishers was not take over the position of Nawab. They just want to willing in the trade only. As you know, in this chapter we know about they don't want to live here, they just want to trade here. But in that time nobody was the Nawab. So Mir Jafar, as they promised to them that Mir Jafar was the next Nawab of the Calcutta. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. But it is also true that they want the puppet Nawab. Puppet means जो उनके हाथों से नाच सके, जो उनके हाथों से चल सके, जैसे वो जैसा कहें वो वैसा करे. जैसे कि सिराजुद्दौला जो थे वो वैसे नहीं थे जैसा कि वो चाहते थे. दे आर नॉट टेकिंग, ही इज़ नॉट टेकिंग टैक्सेस, और जो भी वो कहे वो उन्हें करने दे. पर सिराजुद्दौला ने कुछ ऐसा नहीं किया. दैट्स वाई द बैटल ऑफ प्लासी हैपन, राइट. तो अब यहाँ पर चीज़ आ रही थी, इट कुड बी डन विदाउट कंटेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर who were willing to grant privileges. The territory need to be taken over directly. और उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, मीर जाफ़र को जो था वहाँ का नवाब बना दिया. आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ मीर जाफ़र ऑल्सो. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मीर जाफ़र. ही वॉज द चीटर, right? As you people know, still Mughal Empire was continuously going on. So in that time you can see soon the company discovered that this was rather difficult. अब कंपनी को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड दैम टू बी. Company want that everything they are doing in that as they want, right? So in that time they are not doing same things that company want. They are having their own wishes also, because they are Nawab, they are having their own expenses, so they want taxes and other things also. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity, that the sovereignty, if they wanted respect from their subjects, right? Their subject means their power, their everything. So in that time Mir Jafar also have their own expenses, और उन्हें अपनी डिग्निटी भी बना के रखनी होती थी, बिकॉज दे आर नवाब. तो उन्हें रहना तो नवाब की जैसे ही पड़ता था. सो जहाँ तक चीज़ें हो रही थी, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स और मीर जाफ़र में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे. वॉट कुड बी कंपनी डू? अब कंपनी क्या करती? व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने विरोध करना शुरू किया, द कंपनी डिपोज्ड हिम टू द एंड इंस्टॉल मीर
Qasim in the place. Mir Qasim was the son-in-law, okay, son-in-law of the Mir Jafar. He in turn was defeated in the battle through at Buxar. लेकिन फिर भी चीज़ें संभली नहीं, और क्या हुआ 1764 में ये एक फिर से टर्निंग पॉइंट आया. प्लासी का युद्ध जो था, इट इज़ द वेरी फर्स्ट वॉर, बट नाउ द सेकेंड वॉर वॉज बक्सर 1764. But he was not alone in that time. Driving out the Bengal and the Mir Jafar was reinstalled. अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर फिर से वॉर हुआ. किसके किसके बीच में हुआ वॉर? अब वॉर होने, यहाँ पर वॉर जो हुआ, इट इज़ बिटवीन द मीर मीर कासिम. Mir Qasim was not alone. He knows that alone he cannot win the war. So he just meet with the two other people. To Shah Alam, who was the king of that time of Delhi, and the Suajuddaulah. Suajuddaulah was the king of Awadh in that time. So they both came together. The three are there, and battle started, but still they defeated, and after that again Mir Jafar was reinstalled. Means उसको दोबारा से वहाँ का नवाब बना दिया गया. क्यों बना दिया गया? What is the reason? The Nawab had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance in its wars. अब क्या हुआ? बिकॉज मीर जाफ़र ने क्या प्रॉमिस कर दिया. अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ. मीर कासिम आए, मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफ़र को बना दिया गया. क्यों बना दिया गया? बिकॉज मीर जाफ़र ने फिर से एक बात कही. अब वो, as you people know, why Britishers came here to earn the money only, and the Nawabs told to Britishers, I will pay you 5 lakhs per month if you make me Nawab of the Calcutta, right, and meet the demands of the trade and other expenses. और they want the money only. So उनको बाकी expenses में जो खर्च हुआ था, they want more money. 5 lakhs are not less, but still they want more money. Britishers want more money. By the time Mir Jafar died, और इसी टाइम पे क्या होता है, मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है 1765 में. द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, हैविंग फेल्ड टू वर्क विथ पपेट नवाब्स. अब इन लोगों का मूड जो है वो चेंज हो जाता है. यहाँ पर नवाब्स ब्रिटिशर्स थॉट दैट इट इज़ नॉट गुड, पपेट नवाब्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो वी डिक्लेयर वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्फ. अब हम अपने खुद को ही नवाब बनाएंगे, अब हम खुद ही नवाब बनेंगे. फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर्स अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. द दीवान अलाउड कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. फाइनली 1765 में क्या हुआ, मुगल एम्परर्स को अपॉइंटेड टू द कंपनी एज अ दीवान. उनको दीवान बना दिया गया. अभी तक वो लोग क्या थे, नवाब थे. नवाब से हटा करके उनको दीवान बना गया. तो ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, जैसे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस चैप्टर कि आफ्टर दैट दे बिकम द दीवान एंड दे कलेक्ट द रिवेन्यू ऑफ द फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए वो क्या करते थे, रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे फ्रॉम द बंगाल के अलग अलग स्टेट से. दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. और यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है. दे फेस रिलैक्स्ड, नाउ इट्स ओके, नाउ दे आर गेटिंग मनी एंड दे आर नॉट puppets like other. They can do their own business, right? From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with the gold and silver imported from Britain. So now what happened, India had very much लॉस हो रहा था इंडिया को. क्यों हो रहा था? बिकॉज बिफोर दैट तो दे आर ब्रिंगिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ब्रिटेन एंड गिव हेयर फॉर ट्रेड. यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, अपना गोल्ड और सिल्वर दे करके यहाँ से सामान खरीद रहे थे. बट नाउ व्हाट हैपेंड, दे आर टेकिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम हेयर एंड ट्रेड्स ऑल्सो फ्रॉम डूइंग फ्रॉम देयर एंड एवरीथिंग गोइंग टू द ब्रिटेन. आज हम लोग कहते हैं कि इंग्लैंड इज़ अ वेरी गुड कंट्री. हाउ इट इज़ अ गुड एंड रिच कंट्री? बिकॉज दे
sell all the things from here. They take all the things from here, gold, silver, as well as the goods, right? And they are not paying money at all. So, or they are paying very less money, it may happen. So sell in India. The overflow of goods from Britain solved after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of दीवानी. यानी कि दीवानी के बाद तो सारा कुछ ख़त्म ही हो गया. Now revenue from India could finance company expenses. जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे वो कंपनी के एक्सपेंसेस में यहाँ पर खर्च होता था. अब यहाँ के लोगों को उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता था. ठीक है. द मेंटेन कंपनी ट्रूप्स मीट कॉस्ट बिल्डिंग्स कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस और एट कैलकाटा. और कैलकाटा में जितने भी उनके ऑफिस बने थे सारे को वो उन लोगों को मैनेज करना होता था. दे मैनेज ऑल द थिंग्स बाय द रेवेन्यू दैट दे कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिया ओनली एंड स्लोली दे एक्सपेंडेड देयर फ्रीडम ऑल्सो. लाइक जैसे जितना उनका एरिया था, कैलकाटा का जो एरिया था उसके बाहर भी वो अपने आप को एक्सपेंड करने लगे, बढ़ाने लगे थे धीरे धीरे. क्योंकि बिकॉज इन दैट टाइम देयर इज ओनली कॉलोनिकल सिस्टम, राइट. देयर इज़ नॉट एरिया, ये बस इतना ही रहेगा. ठीक है. कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स. अब देखिए नवाब से उन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, नवाब्स कहना शुरू कर दिया. व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब्स? It means, of course, that the company acquire more power and authority, but it also means something else. Each company's servant began to have vision of living like nawabs. अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात आती है कि people want to live like nawabs. Everyone want to live. Those who are work with the nawabs, they or with the company, everyone want to live their life luxurious like Nawabs. After the Battle of Plassey, at the actual Nawab of the Bengal were forced to be land and lost some of the money of the personal gift to company officers. After Plassey के युद्ध के बाद भी यही चीज़ हो रही थी. After the Plassey battle, so many people are giving the gift of the company officers because everyone want to live the luxurious life. So they are thinking कि I will also get the position, good position in the British East India Company, right? So they are giving them gifts or personally money, each and everything, grains, so many things. So Robert Clive himself assembled a fortune in India. So many people, those इसके बारे में कहा जाता है कि 18 की एज में आ गया था. When in 1765 left India, Indian fortune was worth, ये आपका इसमें 401,102 ये डॉलर में रहा होगा. इंटरेस्टिंगली मतलब इतनी मनी थी उसके पास. 4 लाख डॉलर्स थे, राइट. इंटरेस्टिंगली उसके पास इतना पैसा हो गया था. ही वॉज अ रिचेस्ट पर्सन व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द बंगाल इन 1764. ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड. कंपनी को उसने क्या बोला कि करप्शन को बंद करवाएंगे, कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको हम बंद करवाएंगे. बट उसी का क्रॉस एग्जामिन किया गया और उसी को सबसे ज़्यादा करप्ट पाया गया इन 1772 बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसके ऊपर शक किया और उसका क्रॉस एग्जामिन करवाया गया. देन ही वॉज फाउंड दैट एक्वाइड, उसको पाया गया, दोषी पाया गया. ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उसको सस्पिशियस किया गया और उसके बाद उसने 1774 में सुसाइड कर लिया शर्म के कारण, राइट. हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव्स. But everyone cannot earn money like Clive. Clive is in the higher post, so that's why he got the money. But everyone not. Many died an early death in India due to the disease and war, because in that time so many diseases are spread in India and war is also after war disease are spread. And
It would not be right to regret all of them as corrupt, as dishonest. But we cannot say कि all the Britishers are dishonest or the Britishers are corrupt, because every person is not like each other. So many of them came from humble background, and their uppermost desire was to earn enough in India. They don't want to live here, so they just want to earn money from the India only, and they are very humble. Some are very humble, helpful, right? Return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. Means they just want to live their life comfortable. They just want the money earn the money from the India, and they want to become rich. They were called Nawabs. Those who earned enough money, live luxurious life, and themselves they told Nawabs. वो अपने आप को नवाब्स कहलवाने लगे. And Anglicized version of the Indian word नवाब. नवाब का ही दूसरा वर्जन था इंग्लिश में जिसको कहेंगे. They were often seen as upstart and social climber in British society and were ridiculed or made fun of in place of cartoons. But listen, if anyone come from the foreign and behave in India like the foreigner, so we make fun of them, right? As it is, they came from the India to British. They go from the India to the British. In the same way, they behave like Indians, or they became like Nawabs, Indian Nawabs. So they are making fun by others and plays, and everyone told them like cartoon, right? So this is the one thing that happened after the Plassey and Buxar. These are the two important battles in Indian and British history. This is the first word of Panipat, Buxar and Plassey, right? Company rule expanded. अब बात आती है why company expanded their rules. Company expanded their rules also. So what happened? If we analyze the process of the annexion an Indian state by the East India Company from 1757, in 1657 certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. Because when company become the Nawabs and hand over all the things, they want to expand the rules. Means they made their own rules, they made their own regulations for the Indian people, for the company also. After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. Now Indian states में residence start किया. They were political commercial agents. Of their jobs was to serve and further the interest of the company through the residence. The company officials began interfering in the internal affairs of Indian state. अब क्या हुआ? Now they start their own rules to interfere all the political things, all the things of other states also. They try to decide who was be the successor to the
throne. अब उन्होंने क्या कहा कि अब हम डिसाइड करेंगे कि सक्सेसर कौन होगा, मीन्स उत्तराधिकारी कौन होगा, किस थ्रोन का एक उत्तराधिकारी, बिकॉज इन दैट टाइम सो मैनी किंग्स आर देयर इन अदर states. As I already told you, there is so many other small kingdoms. So they just hand over all the things and they told कि now we decide who will be the next succession. ठीक है, and who was be appointed administrative post. Something company forced two states into the subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company. Now everything in the hand of the Britishers and we are the slaves of Britishers. So now start the another story of the Indian slavery, right? Thank you and have a nice day. We will see in the next video. Okay.